Good evening, everyone. સદન ગુજરાત ચેમ્બર એન્ડ કોમર્સના અંદર આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું ને વેલકમ એડ્રેસ કરવા માટે હું દીપકભાઈ શેઠવાલા સેક્રેટરી સાહેબને રિક્વેસ્ટ કરું છું. નમસ્કાર. આજના આ સેમિનાર સ્ટોક માર્કેટ ટુડે એન્ડ ટુમોરો એમાં ઉપસ્થિત સ્ટોક માર્કેટના ખેરખા અને કોટક મહિન્દ્ર એએમસી એટલે એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી નિલેશભાઈ શાહ, કેપિટલ માર્કેટ કમિટીના ચેરમેન શ્રી યાકુબભાઈ, એડવાઇઝર શ્રી કેતનભાઈ, હેમંતભાઈ અને અસીમભાઈ, તેમજ સર્વે અહીંયા જોડાનાર મિત્રો, તમારું હું ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ તરફથી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ફ્રેન્ડ્સ, સ્ટોક માર્કેટ એ વર્ષોથી એવો સબ્જેક્ટ છે કે જેમાં જેટલું ભણીએ જેટલું સમજીએ એટલું ઓછું છે, અને એવું થાય કે આપણે નવી નવી એમાં ઇન્ફોર્મેશન લેતા જઈએ, નવી નવી જે પદ્ધતિ આવે છે એમાં શીખતા જઈએ અને માર્કેટનો ટ્રેન્ડ શું છે એ સમજતા જઈએ. કારણ કે સ્ટોક માર્કેટ એટલે હું જે સમજું છું તે કે આપણે જે પણ આપણા બિઝનેસમાંથી કમાઈએ છીએ એમાંથી અલગ અલગ ભાગમાં આપણો વહેંચણી કરવાની હોય છે આપણી ઇન્કમની. એમાં એક ભાગ આપણે એવો આવે છે જે આપણને થોડાક રિસ્ક સાથે થોડી કમાણી વધારે આપે એવો એક ભાગ કહેવાય, તો એ શેર માર્કેટનો આપણે કહી શકાય. અને એ શેર માર્કેટમાં આપણે સારામાં સારું કમાણી કેવી રીતે કરી શકીએ એને માટે આપણે વિવિધ વાંચનો કરતા હોઈએ છીએ, વિવિધ પુસ્તકો, વિવિધ મેગેઝિનો અને કંપનીને ફોલો કરતા હોઈએ છીએ. આજકાલ તો બધું મોબાઈલ એપમાં આવી ગયું છે અને આવા ખ્યાતનામ નિષ્ણાતો છે એમની સલાહ, એમના સૂચનો, એમના વિચારો આપણે સમજતા હોઈએ છીએ. આજે ભારત જે રીતે પ્રગતિ કરી રહ્યું છે, કોરોના પછી મારા ખ્યાલથી ઇકોનોમી બાઉન્સ બેક થઈ રહેલી છે અને દરેક સેક્ટરમાં સારો વિકાસ થઈ રહ્યો છે. સ્ટોક માર્કેટ પણ જ્યારે કોરોનામાં લગભગ 26-27 હજાર પર હતું, આજે 57-58 હજાર પર પહોંચી ગયું છે, ઓલમોસ્ટ ડબલ કરતા વધારે એવી પરિસ્થિતિ છે. જીડીપી ગ્રોથ પણ વધી રહ્યો છે. ત્યારે બધાની કમાણી વધે અને કમાણી વધે એની સાથે સ્ટોક માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ વધે, ફોરેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ સારું આવી રહ્યું છે. આજે એવું કહેવાય છે કે Indian economy, India is now ranked 6th in the global ranking of the market capitalization of the stock market, just overtaking the France. આ પરિસ્થિતિ આપણા દેશની છે, ત્યારે આપણે બધા વધારે ઉત્સુક હોઈએ કે આપણે સ્ટોક માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટ કરીએ, સેફલી કરીએ. રિસ્ક તો રહેવાનું જ છે, પણ વધારે સારું જો સમજણપૂર્વક કરીએ તો આપણા જે બી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એનો આપણે સારો બેનિફિટ થાય. આ આશયથી ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ પણ સ્ટોક માર્કેટના ઘણા બધા સેમિનાર અને વેબિનારનું આયોજન કરતા હોય છે. આજે એવો જ એક પ્રયાસ છે, તેમાં ફરીથી હું સૌનું સ્વાગત કરું છું. અને આ સ્ટોક માર્કેટમાંથી તમે ચોક્કસ જ કોઈ સારું ઇનપુટ લઈ લીધા. નિલેશભાઈ બહુ જ અનુભવી છે, ઇવન પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની પેનલમાં પણ એ ત્યાં રહેલા છે, તો એમની તરફથી આપણને બહુ સારું શીખવાનું મળશે, બહુ સારી ઇન્ફોર્મેશન મળશે. અને હવે 58,000 પરથી શેર બજાર 1 લાખ પર ક્યારે પહોંચે છે એની બી એ વાતો કરશે એવું આપણે સમજીએ અને આપણે એમનો ચોક્કસ જ ફાયદો લઈશું. બધા અહીંયા જોડાયેલા મિત્રો પણ ફાયદો લેશે અને પોતાની લાઈફને વધારે સારી સુધર બનાવશે. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને તમે બધા જ આજે આવ્યા છો, ફરીથી સ્વાગત કરું છું. થેન્ક યુ દીપકભાઈ. આપણે નિલેશભાઈને તો સુરતના બધા જ ઇન્વેસ્ટરો લગભગ પરિચિત છે, પણ કેતનભાઈ દલાલ જે અમારા એડવાઇઝર છે એમનો ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ સ્પીકર કરવા માટે હું રિક્વેસ્ટ કરું છું. થેન્ક યુ અયુબભાઈ. એમનો પરિચય આપવો એ મારા માટે ખૂબ ગૌરવની વાત છે. હું એમનો શું પરિચય આપું કે જેમનું નામ જ એક ખુદ પરિચય છે. તેમ છતાં હું જરૂરથી કોશિશ કરીશ. એમના નામ પ્રમાણે એમના પરફેક્ટ ગુણો છે. એમને શાહ ઓફ ઇન્ડિયન કેપિટલ માર્કેટ કહીએ તો જરાય અસ્થાને નહીં ગણાય. નિલેશ ધ પ્રિઝર્વર, ધ સેવિયર. એમને નોલેજ ઇમ્પાર્ટિંગ થી, સેમિનાર થી ઘણા ઇન્વેસ્ટર્સને માર્કેટમાંથી ગંભીર ભૂલો કરતા અટકાવ્યા છે. એમનું નોલેજ કેપિટલ માર્કેટમાં જ નહીં પણ પૂરા દેશ વિદેશમાં પ્રખ્યાત છે. એવમ એસોસિએશન ઓફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન ઇન્ડિયાના ચેરમેન છે અને ઇકોનોમિક એડવાઇઝરી કમિટી ટુ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઓફ ઇન્ડિયામાં પણ એમનું ખૂબ મોટું યોગદાન છે.
એકેડેમિકલી પણ ખૂબ સારું ક્વોલિફિકેશન ધરાવે છે. એવમ સીએ વિથ ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ અને મેરિટ કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ પણ છે. કેપિટલ માર્કેટની વાત કરીએ તો એમને 27 વર્ષનો ખૂબ બહોળો અનુભવ છે. એવમ બંને સેગમેન્ટની સ્કીમો ઇક્વિટી અને ફિક્સ ઇન્કમની ખૂબ સારી રીતે મેનેજ કરી શકે છે. કોટક મ્યુચ્યુઅલ ફંડને બેસ્ટ ફંડ હાઉસનો ખિતાબ જીતવામાં એમનો ખૂબ મોટો સી ફાળો રહ્યો છે. અત્યારે સ્ટોક માર્કેટને સમજવું ખૂબ જ કોમ્પ્લેક્સ છે. એક બાજુ એફઆઈઆઈ ની સતત વેચવાલી છે અને બીજી બાજુ ડીઆઈઆઈ અને રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સનો ઓલ ટાઈમ હાઈ કોન્ફિડન્સ છે. અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્ડસ્ટ્રીએ એસઆઈપી નો નવો રેકોર્ડ સ્તર કર્યો છે. ત્યારે ફેડની ઇન્ટરેસ્ટ રેટ હાઇકની ગાઈડન્સ અને બીજી બાજુ આરબીઆઈ ની ડોવિસ પોલિસી અને આવામાં ઇન્ફ્લેશને પણ માથું ઉચકી રહ્યું છે. આમાં કેટલું ઇન્ફ્લેશન સ્ટીકી છે અને ટેમ્પરરી છે એ આપણે સમજવું રહ્યું. આવા સંજોગોમાં ઇન્વેસ્ટર્સને ડિસિઝન મેકિંગમાં ખૂબ મૂંઝવણ ઊભી થઈ છે. તો સ્વાભાવિક છે કે નિલેશભાઈ જ યાદ આવે ને. નિલેશભાઈ ગમે તેવી કોમ્પ્લેક્સ સિચ્યુએશનને ક્રિકેટની એનાલોજીથી કે પછી ખૂબ સારા એક્ઝામ્પલ આપીને ખૂબ સારી રીતે ઇન્વેસ્ટર્સને સમજાવી શકે છે. આ એમની ખૂબ મોટી વિશિષ્ટતા છે. તેથી આજનો જે વિષય સ્ટોક માર્કેટ ટુડે એન્ડ ટુમોરો એ નિલેશભાઈ આપણને ખૂબ સારી રીતે સમજાવી શકશે. સ્ટોક માર્કેટ તો આજે પણ છે અને કાલે પણ રહેવાનું છે, પણ આમાં આપણે કેટલું સારી રીતે ટકી શકીએ એ આજે આપણે નિલેશભાઈ પાસેથી સમજીશું. Friends, on a lighter note, somebody asked what is the right time to do the SIP, and the answer came anytime during the market hours. આશા રાખું છું કે આજનો આ સેમિનાર આપ સૌને ખૂબ ઉપયોગી નીવડશે. આટલું કહી હું વિરમું છું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ કેતનભાઈ. હવે ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ ટોપિક ને હું કવર કરી લઉં છું. બજેટના વિશ્લેષણમાં લોંગ ટર્મ માટે સારું રહેશે એવું લાગે છે, પરંતુ એક સપ્તાહ બાદ યુક્રેન ને રશિયાના તણાવમાં વૈશ્વિક અને ભારતીય બજારોમાં વેચવાલીનું દબાણ જોવા મળ્યું હતું. તેજીના માહોલમાં એકાએક પલટો જોવા મળ્યો. આ શેર બજારની વિશેષતા છે અને આ વિશેષતાના લીધે રોકાણકારો મૂડી બજાર તરફ આકર્ષણ રાખે છે. જેમ કેતનભાઈએ કહ્યું કે એફઆઈઆઈ નું કન્ટિન્યુઅસ મતલબ સેલિંગ હતું, લગભગ 1,30,000 કરોડ જેવું વેચાણ થયું, તેમ છતાં પણ માર્કેટ એટલું બધું નહીં તૂટેલું. ને પછી રશિયા ને યુક્રેનનો જે બનાવ બન્યો એના કારણે માર્કેટમાં 2-3 ડેઝથી થોડુંક સેલિંગ જોવા મળ્યું. 18,600 નો લાઈફ ટાઈમ હાઈ બનાવી ભારતીય મૂડી બજાર આજે 16,800 16,700 પાસે આવી ગયું છે. વૈશ્વિક તણાવના લીધે મૂડી બજારમાં ધોવાણ જોવા મળ્યું છે. હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે શું ભારતીય બજાર મૂડી બજાર છેલ્લા 2 વર્ષથી જોવા મળતી તેજીને બ્રેક લાગશે કે ફક્ત શોર્ટ ટર્મ કરેક્શન બતાવી નવી તેજી તરફ જશે? આમ તો માર્કેટમાં ફરી વાતો ચાલુ થઈ ગઈ છે કે મોટા આઈપીઓ આવે એટલે માર્કેટ ઘટે. રિલાયન્સ પાવરના આઈપીઓ બાદ શેર બજારમાં કડાકો જોવા મળ્યો હતો અને હવે એલઆઈસી નો આઈપીઓ આવવા જઈ રહ્યો છે. ત્યારે શું મૂડી બજારમાં વેચવાલી આવી રહેશે? ચેમ્બર અને આઈસીએઆઈ દ્વારા આજનો વેબિનાર યોજવામાં આવ્યો, સ્ટોક માર્કેટ ટુડે એન્ડ ટુમોરો. એ ઘણો સારો છે ને આવા ટાઈમ પર આવો સેમિનાર કરો એટલે રોકાણકારોને એક સાંભળવાનો પેલો લાવો હોય કે ભાઈ આ આપણે સેમિનાર કંઈક સાંભળીએ ને કે આમાં વધુ જાણવા મળે. ને તેમાં નિલેશ સર આપણી વચ્ચે છે તો આપણને સારું આનાથી જ્ઞાન મળશે.
અને સારા સમય પર આ વેબિનાર યોજવામાં આવ્યો છે. બજેટ બાદનું કરેક્શન મંદીની શરૂઆત છે કે બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે એ આજના વક્તા શ્રી નિલેશભાઈ શાહ ઘણી સારી રીતે આપણને સમજાવશે. હું નિલેશભાઈને વિનંતી કરીશ કે યુ વિલ સ્ટાર્ટ સર. Thank you, Yakub Bhai. Thank you, Ketan Bhai, for kind introduction. All the office bearers of Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry. I'll try to speak in a blend of Hindi and English so that I can meet demand of all the people who wants me to speak either in Hindi or English. अगर आप मार्केट को देखें तो वो हमेशा एक सिनारियो डिस्काउंट करता रहता है. जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है उसको वो प्रोसेस करता है और एक सिनारियो बिल्डअप करता है. अब एक्चुअल इवेंट्स उस सिनारियो के अनुसार बनती है तो मार्केट वहीं का वहीं रहता है. इवेंट्स अच्छी बनती है तो मार्केट ऊपर जाता है और इवेंट्स खराब बनती है तो मार्केट नीचे आता है. कुछ दिन पहले हमने देखा मार्केट ने सिनेरियो बिल्डअप किया कि रशिया और यूक्रेन के बीच में मारामारी होगी, मार्केट जोर से गिरा. नेक्स्ट दिन लगा कि अब ये मारामारी नहीं होगी तो मार्केट रिकवर हो गया. सो इस वक्त हमें ये तय करना जरूरी है कि मार्केट क्या डिस्काउंट करके बैठा है. व्हाट इज इट दैट इज प्राइस्ड इनटू द मार्केट. If actual event turns out to be better than what is priced by the markets, markets will go up. If actual event turns out to be worse, then markets will come down. So सबसे पहले what market is discounted कि ओमिक्रॉन की वजह से अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर इम्पैक्ट नहीं गिरेगी. लोग अपना कारोबार कर पाएंगे, लोग अपनी लाइफ नॉर्मली व्यतीत करेंगे और अब ओमिक्रॉन कोविड-19 की वजह से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे डिसरप्शन नहीं होगा. आने वाले समय में ओमिक्रॉन का कोई एक और वेरिएंट आ जाए, वापस हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर कर्टेलमेंट करना पड़े तो मार्केट गिर सकता है. बट अगर ओमिक्रॉन का कोई वेरिएंट नहीं आता है, हम लोग नेक्स्ट मीटिंग पर्सनली एक दूसरे के सामने कर सके तो मेरे हिसाब से मार्केट ऊपर जाता रहेगा. दूसरी चीज जो मार्केट डिस्काउंट करके बैठा है कि इस बजट में सरकार ने इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया है और बजट में काफी निवेश के लिए प्रपोजल रखी है. रोड के ऊपर, रेलवे के ऊपर, हाउसिंग के ऊपर, वाटर के ऊपर, डिफेंस के ऊपर. ना बजट एक दिन की बात है, 364 दिन उस बजट को अचीव करने के लिए काम करना पड़ेगा. यह मार्केट यह अनुमान लगा के बैठा है कि बजट के ऊपर एग्जीक्यूशन सही तरीके से होगा और इस बजट में हमने जो अनुमान लगाए हैं ग्रोथ के या रेवेन्यू रिसीट के, उससे एक्चुअली में काफी बढ़ोतरी होगी. बजट में हमने नेक्स्ट ईयर का जीडीपी ग्रोथ नॉमिनल टर्म्स में 11.1% रखा है. इकोनॉमिक सर्वे में रियल जीडीपी ग्रोथ 8 से 8.5% के आसपास रखी थी. महंगाई का दर 5 से 5.5% के आसपास है. 8 + 5 करो तो भी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 13% के आसपास आना चाहिए. सो 11.1 बजट के सामने 13, 13.5, 14% ग्रोथ आएगा वैसा लगता है. रेवेन्यू रिसीट जो बजट ने एस्टिमेट किए वो बहुत ही कंजर्वेटिव है. टैक्स का कलेक्शन में कोई ग्रोथ नहीं है. आरबीआई डिविडेंड में कटौती होगी ऐसा सोच रहे हैं. तो मेरे हिसाब से मार्केट ये उम्मीद लगा के बैठा है कि बजट में जो नंबर एक्सपेक्ट किए हैं, अनुमान किया है, उसके सामने वी विल रिसीव फार हायर नंबर, फार बिगर नंबर, एंड दैट्स वेयर ग्रोथ विल बी बेटर.
तीसरी चीज जो मार्केट डिस्काउंट करके बैठा है वो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर है. इन FY20 Nifty 50 companies profit was 3,50,000 crore. FY23 expectation is that number will go to 7 lakh crore. This will result into earning per share for Nifty 50 companies of about 875 rupees for FY23. अब December quarter के numbers आए. Based on that, it looks like that we will touch 875 rupee earning per share for FY23. On that basis, at 17,300 Nifty, we are trading at about little under 20 times FY23. Now, this is marginal premium to our historical average of 18 times price to earning ratio. So normally we have traded historically at 18 times 1 year forward. Today we are trading at about 20 times 1 year forward. We are at 10% premium to our historical average. Why are we trading at premium to historical average? Because our interest rates have come down compared to historical average. And more importantly, our growth rate in profitability is little above historical average. As long as March 22 quarterly results, June 22, September 22, December 22 quarterly results tell us that we are on course to achieve 7 lakh crore profit in FY23 or 875 rupees earning per share for Nifty 50 companies in FY23, markets will continue to rise steadily. ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हर करेक्शन में मार्केट को एक बॉटम दे देगी, बिकॉज एट दैट प्राइस इट विल बिकम चीपर टू इन्वेस्ट इन इक्विटी. The fourth thing which market has discounted, कि Russia and Ukraine will not go to war. Now there are many Western media which are saying that Russia will still declare a war. Russia itself is saying that I am pulling troops from the border. We really don't care what happens between Russia and Ukraine. But हमारा जो problem है वो oil price से है. Russia is one of the largest energy producer in oil as well as gas. If America puts sanctions on them, then it is possible that their oil production, gas production can come down. They are the biggest supplier of oil and gas to Europe. If their supply comes down, oil and gas prices will go up. And India is the top 3 importer of energy produce in the world. Oil prices already $60 की $80 होते होते हुए $100 पे पहुंच रही है. गैस प्राइसेस में भी वैसे ही बढ़ोतरी हो रही है. जब ऑयल ऊपर जाता है तो हमारी महंगाई बढ़ती है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ती है, तो रुपी डिप्रिशिएट होता है और ग्रोथ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट होती है. मार्केट आज ये डिस्काउंट करके बैठा है कि ऑयल $100 के आसपास रहेगा और रशिया और यूक्रेन में कोई एस्केलेशन नहीं होगा, वॉर नहीं होगा. नाउ as of today it looks like it is happening, but if anything goes contrary, markets can come down. If things go as per expectations, markets will continue to rise. So to summarize, market has discounted. Omicron will not impact economic activity. Budget which is very, very conservative. In reality, execution will be better. Third, corporate profitability will go to 7 lakh crore for Nifty 50 companies in FY23. It's 875 rupee earning per share for Nifty 50. And fourth, oil prices will remain around $100 a barrel, and there will be no fight between Russia and Ukraine. Now, इसके सिवा एक और कबड्डी की मैच चल रही है आर मार्केट में. एक साइड पे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं
दूसरी साइड पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं. Foreign investors have been selling since October 21. October, November, December, January. They have sold close to 77,000 crore. In the month of February till today, they have sold close to 20,000 crore. So, kul milake, they have almost sold 1 lakh crore worth of stock between October 21 till today. And our markets are down just 10% from top. 18,600 was high. Today we are trading at 17,300, roughly 1,300 points down, less than 10%. In March and April 20, FPIs had sold about 69,000 crore of equity. In that 69,000 crore selling, markets had corrected by 40%. 12,300 Nifty became 7,500. Why did 69,000 crore selling create a 40% drop? And 1 lakh crore selling has only created less than 10% drop. This is because of the Kabaddi match. In March, April 20, FPIs were selling without any price limit. 10 lakh Tisco बेच दे, 5 lakh Reliance बेच दे. They were not putting any price limit. Their selling was bringing prices down, and domestic investors, including mutual funds and retail investors, were buying, but at a lower and lower prices. That's why correction was sharp. We went down 40%. This time, FPIs are selling. They are selling more than what they had sold in March and April 20, but their selling is with price limit. They are not selling at any prices. They are selling based on their view on individual stocks up to a price limit. Because of that calibrated selling, gradual selling, market में एक रेंज बन गई है. जब एफपीआई बहुत एग्रेसिवली बेचते हैं तो शायद एक आध दिन के लिए हम 16,500 निफ्टी हो जाते हैं. जब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बहुत जोर से खरीदते हैं तो कुछ दिन के लिए हम 18,500 निफ्टी हो जाते हैं. बट बाय एंड लार्ज हम 17,000 से 18,000 निफ्टी के बीच में अक्टूबर से घूम रहे हैं. एज लॉन्ग एज एफपीआई सेलिंग इज कैलिब्रेटेड, प्राइस लिमिट में बेचेंगे तो मार्केट की ये रेंज बनी रहेगी. बट कल को उठ के उनको किसी कारणवश विदाउट प्राइस लिमिट मार्च अप्रैल 2020 की तरह बेचना है तो मार्केट में करेक्शन बड़ा हो सकता है. बट जितनी जोर से मार्केट गिरेगा उतनी जोर से ऊपर आ जाएगा जिस दिन एफपीआई की सेलिंग खत्म हो जाएगी. और अगर एफपीआई बाइंग मोड में आ जाए तो मार्केट यहां से ऊपर चला जाएगा. सो मार्केट में कबड्डी की मैच चल रही है एफपीआई और डोमेस्टिक के बीच में. अगर वो ढंग से खेले तो 17 से 18,000 की मार्केट है कुछ समय के लिए. एफपीआई जोर से बेचे तो नीचे की साइड पे आ सकते हैं, और एफपीआई खरीदने निकल आए तो ऊपर की साइड में मार्केट जाएगी. एक सवाल ये उठता है कि एफपीआई बेच क्यों रहा है, उनको भारत में क्यों बेचना पड़ेगा इस वक्त. एक, हमने दुनिया के बाकी देशों के सामने बहुत अच्छा पैसा बना के एफपीआईज को दिया है. अगर मार्च 20 से आप देखें तो भारतीय मार्केट डॉलर टर्म्स में तकरीबन 54% ऊपर आई है फ्रॉम मार्च 20 टू जैन 22. इसी समय में एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट 20% ऊपर आई है. सो दुनिया के बाकी देशों में आपने निवेश किया तो 20% रिटर्न बना प्रति साल, और भारत में 54% बना, दुगने से ज्यादा. ना आप सोचिए एफपीआई को अगर प्रॉफिट बुक करना है तो कहां से करेगा, ऑब्वियसली भारत से करेगा. हमें लगता है कि एफपीआई की सेलिंग जरूर बनी रहेगी कुछ समय के लिए, मे बी जून महीने तक, बट उनकी सेलिंग कैलिब्रेटेड रहेगी, प्राइस लिमिट के साथ रहेगी. प्राइस तोड़ तोड़ के वह नहीं बेचेंगे. अगर ये कॉल सही गिरता है तो मार्केट रेंज बाउंड रहेगा,
बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं होगा। नाउ ये सारी चीजें तो शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होती रहेगी। हम कोई गारंटी के साथ नहीं कह पाएंगे कि रशिया यूक्रेन में क्या होगा, ऑयल प्राइस में क्या होगा, ओमिक्रॉन में क्या होगा। ये कुछ ज्यादा विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हाँ 7 लाख करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ दिखता है। और एफपीआई की बिहेवियर के ऊपर भी आप कम कॉन्फिडेंस के साथ, कम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वो लोग किसी भी दाम पे नहीं बेचेंगे, वो लोग एक प्राइस लिमिट के साथ माल बेचेंगे। बट अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट्स आर ड्रिवन बाय फंडामेंटल्स, and fundamentals of India today are fairly strong. Let me tell you how India has changed in recent times. 1947 to 1991 we were tortoise style in terms of growth. बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और दुनिया के बहुत सारे देश हमसे बहुत आगे चले गए। In 1947, Japan was below India in per capita GDP. Today they are much larger than us. 1960, South Korea was equivalent to India in per capita GDP. Today they are much ahead of us. In 1980, China was equivalent to India in per capita GDP. Today they are 5 times bigger than us. So we did well from 47 to 91, but others did far better than us. 91 में we started liberalizing, and then that journey has continued till 2022. What has changed in last 30 years? If you see earlier Hindi movies, मदर इंडिया, रोटी कपड़ा और मकान, कालीचरण, उसमें विलन हमेशा ब्लैक मार्केटियर होता था, फूड ग्रेन गोदाम में रख देता था और फिर हीरो उस गोदाम में जाता था। लास्ट ऐसी कौन सी मूवी आपने देखी जिसमें विलन वाज अ फूड मार्केट, ब्लैक मार्केटियर? अब विलन होता है टेररिस्ट, अब विलन होता है पॉलिटिशियन, अब विलन होता है कोई और, बट ब्लैक मार्केटियर जनरली दिखता नहीं है। व्हाई इज दैट हैपनिंग? बिकॉज इन्फ्लेशन जो पहले 10-12% होता था, अब 4 से 6% के आसपास आ गया है। हमने महंगाई के दर के ऊपर काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है और उस वजह से इकोनॉमी अब अच्छी पोजीशन में है। 91 में आपको पता है वी हैड टू प्लेज आवर गोल्ड, सोना गिरवी रखा था फॉरेन एक्सचेंज लोन के लिए। आज की तारीख में वी आर एट $635 billion FX रिजर्व, which is 4th highest in the world. जब अप्रैल मई में सेकेंड वेव कोरोना का आया तो हम लोग चाहिए उतना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, मेडिसिन इंपोर्ट कर पाए। यही चीज अगर 91 में होती तो हम इंपोर्ट कहां से करते? जेब में पैसा नहीं था। $635 बिलियन जेब में हो तो हम एक तरह से बात कर सकते, एक तरह से काम कर सकते हैं। जेब में $2 बिलियन हो तो ऑब्वियसली हवा निकल जाती है। तीसरी चीज जो भारत में हो रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। एक समय था बंबई से सूरत आना हो तो वो 6, 7, 8 घंटे लगा लेते थे। बंबई से अहमदाबाद 12-15 घंटे की जर्नी होती थी। पिछले दिवाली में बंबई से गांधीधाम जाने के लिए निकला कच्छ में, सूरत 3.5 घंटे में पहुंच गया, अहमदाबाद 8 घंटे में और गांधीधाम तकरीबन 13 घंटे में। दिस इज पॉसिबल बिकॉज द इंफ्रास्ट्रक्चर हैज डेवलप्ड। अभी भी डेवलपिंग है, बट कंपेयर टू व्हाट वी हैड इन द पास्ट, नाउ थिंग्स आर फार बेटर। Power availability is high, highways have been developed, ports have become efficient, railway is becoming faster. All these things will make our business competitive. चौथी चीज जो हो रही है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक गोरा पत्रकार था, उसे भारत भेजा गया, 3 साल यहां पे रहा, हमें जी भर के गाली देता रहा। भारत में रह के उसे भारत के बारे में कुछ अच्छा नहीं दिखा।
फिर बहुत अच्छी गालियां दी तो उसको प्रमोशन मिल गया, वो फ्रांस चला गया। फ्रांस में जाके द फर्स्ट ट्वीट ही मेड वाज दैट in India, when I wanted to transfer money from one bank to another bank account, it was instant. The damn thing takes 3 days in France. जो भारत में रह के भारत की कोई अच्छाई नहीं देख पाया था, जब बाहर भेजा तो सारी अच्छाइयां दिखने लगी। आज अमेरिकन लोग अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में लेते हैं और जब वो मिसप्लेस कर देते हैं तो रो रहे हैं। हमारे वहां पे वैक्सीन सर्टिफिकेट व्हाट्सएप पे मिल रहा है। दिस इज द पावर ऑफ इंडिया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। वेस्टर्न वर्ल्ड में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेटली ओन्ड है। अगर आप वीजा और मास्टर कार्ड यूज करते हैं तो पैसा वीजा और मास्टर कार्ड को जाता है। हमारे यहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिकली ओन्ड है। आप जब फोन पे, भारत पे, गूगल पे यूज करते हैं तो वो यूपीआई के तहत बनता है, यूपीआई के तहत निकलता है, उसमें किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। हमारी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी अच्छी है कि गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई अमेरिकन गवर्नमेंट को कह रहा है कि आप भारत की पेमेंट सिस्टम यहाँ पे लेके आइए। दिस इज द पावर ऑफ इंडिया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके ऊपर एक नई इकोनॉमी बन रही है। फाइनली जो 2 चीजें बड़ी अच्छी हो गई है, वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। याकूब भाई, हासिम भाई, आप लोग सब बिजनेसमैन है, पर जब आपने बिजनेस चालू किया तो आपके फैमिली मेंबर्स ने, आपके पेरेंट्स ने आपको पैसा दिया तो आप बिजनेस कर पाए। बट आपके बच्चे, मेरे बच्चे अब हमारे पैसों के मोहताज नहीं है। अगर उनके आइडिया में दम है तो वो प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल से पैसा उठा लेंगे। अपने पेरेंट के पैसे पे ही धंधा करे वो जरूरी नहीं है। आपके पास आइडिया है तो बाजार में आपको पैसे देने के लिए बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल फंड खड़े हैं। भारत ऐसा बदल गया है कि एक तरफ टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसे टोच के उद्योगपति, उनकी सारी लिस्टेड कंपनियां मिलके जितना निवेश करती है, सालाना तकरीबन $75 बिलियन, उतना ही निवेश प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल इस साल करने वाले हैं। तो एक तरफ टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी और सब लिस्टेड कंपनीज इंक्लूडिंग ओएनजीसी एंड बीपीसीएल एंड बेल, और दूसरी तरफ ये पीवीसी फंड, दोनों का निवेश एक सरखा होगा। ये एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज कर रहा है। गांव गांव से बच्चा नए नए धंधे चालू कर रहा है। एक समय था जब आईआईटी, आईआईएम के लड़के बाहर भाग जाते थे, अब वो लोग इंडिया में रह के यहाँ पे नए नए उद्योग लगा रहे हैं, नए नए बिजनेस खोल रहे हैं। इस साल भारत का मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक्सपोर्ट $400 बिलियन होगा, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स $200 बिलियन होगा, रेमिटेंस $90 बिलियन होगा, एंड अदर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स $50 बिलियन होगा। कुछ सालों में हमारा सर्विस एक्सपोर्ट्स हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स के बराबर हो जाएगा। ये अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पूरे भारत को बदल रहा है। एंड फाइनली सरकार अब एक्सेप्ट कर रही है कि दे हैव नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। सरकारी कंपनियां बहुत अच्छी हैं, उनमें बहुत अच्छे लोग काम करते हैं, लेकिन वह प्राइवेट कंपनी के मुकाबले परफॉर्मेंस डिलीवरी नहीं कर पाते। Hindustan Zinc, when it was a PSU, in 2003 produced 100,000 tons of zinc. Today, it is producing 1.8 million tons of zinc. In just about 18 odd years, production is up 18 times. एयर इंडिया जब सरकार के हाथ में थी तो एक तरीके से चलती थी, सालाना 5-10 हजार करोड़ का लॉस करती थी। अब टाटास के हाथ में है तो धीरे धीरे लॉस कम हो जाएगा, एंड इट विल बिकम एज बिग एन एयरलाइन लाइक सिंगापुर एयरलाइन और एटिहाद एयरलाइन और एमिरेट्स एयरलाइन। नाउ इमेजिन ऑल दिस थिंग्स चेंजिंग फॉर इंडिया: moderate inflation, high FX reserves, availability of physical
and digital infrastructure, world-class digital infrastructure, encouragement to entrepreneurs, and government, instead of being player, becoming referee. Put all these things together over next 10-15 years, we will see far better growth of India than previous 10-15 years. If India grows, it will be driven by corporate India, listed India, India Inc. And that will be reflected into stock market. I have seen many people commenting on what to buy tomorrow and what to sell tomorrow. This is a golden opportunity to be an investor in India rather than trader in India. Trading mein 50% of time you will make money, 50% of time you will lose money. Net, it will be zero. If we look at trading experience of people in broking companies, 1 out of 100 goes home with money, 99 loses. Instead, if you become an investor on a long-term basis in good companies, you will make far more money. So, मेरी एक ही इल्तिजा होगी, please be an investor in this India growth story rather than a trader. हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने बैंक अकाउंट HDFC बैंक में, एक्सिस बैंक में, ICICI बैंक में खोले हैं. आज ये अगर तीनों बैंक अच्छा रिजल्ट देती है तो सेलिब्रेशन सूरत, बड़ौदा, राजकोट, अहमदाबाद में होने की जगह पे हांगकांग, सिंगापुर, लंदन, न्यूयॉर्क में होते हैं. बिकॉज HDFC बैंक में 74% FPI ओन करते हैं, जो मैक्सिमम परमिशेबल लिमिट है, और 26% इंडियंस ओन करते हैं. अगर आप ICICI बैंक में देखें, एक्सिस बैंक में देखें, मोटा मोटा वही हाल है. Foreigners ownership of our companies are higher than local. आप ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक में अकाउंट खोल के खुश हुए और गोरे लोगों ने उन कंपनी की ओनरशिप लेके ज्यादा पैसे बनाए. कम से कम अब सीख लीजिए एंड ट्राई टू बी एन इन्वेस्टर रादर देन ट्रेडर कि आज लिया कल बेचा, नेट 15 साल के बाद देखेंगे पैसा कुछ नहीं बना, इनफैक्ट देके निकले. Now let me end this topic by sharing what can happen and what will happen going forward. In 2014, India's mobile phone production value was about 26,000 crore. In 2015, it fell to 19,000 crore. We produced less mobile phones in 2015 compared to 2014. But we were consuming more mobile phones. So we had to import. Our import was running at $8 to $10 billion a year. When you and I were buying mobile phones in 2014-15, job was created in China and Vietnam, then in Noida and Tamil Nadu. The government recognized that ऐसे तो चलेगा नहीं. We had to change things. So they worked with various companies to manufacture mobile handsets in India. Red carpet लगाई manufacturers के लिए, incentive दिया, उनको जमीन दी, environmental clearance दिया, बहुत सारी चीजें सरकार ने की. आज 2021 में हमारी मोबाइल प्रोडक्शन वैल्यू 2,20,000 करोड़ है. From 12th largest producer, we have become second largest producer. Now, India produces more mobile phones than South Korea and Vietnam. From $8 billion import, we have turned to becoming an exporter of $5 billion. The mobile handset industry has created employment of about 7 lakh workers directly and about 22 lakhs workers indirectly. Today, when we buy mobile phones, jobs are created in Noida, in Tamil Nadu and Karnataka rather than in South Korea and Vietnam.
We have become second largest manufacturer. But is our journey over? Answer is no. Today, our mobile export is $5 billion. Vietnam is at $60 billion. China is at $200 billion. So अपने को और बहुत जगह है ऊपर जाने के लिए. But from 12th largest to second largest producer, from 19,000 crore production to 2,20,000 crore production, from import of $8 billion to export of $5 billion, India has covered a lot of distance. जो मोबाइल फोन में हुआ वह बहुत सारे सेक्टर्स में आने वाले समय में होगा. अनफॉर्चुनेटली मोबाइल फोन्स की बहुत कम कंपनीज लिस्टेड थी. ज्यादातर कंपनी सैमसंग, विस्ट्रोन, फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन अनलिस्टेड थी. बट यही चीज टेक्निकल फाइबर्स में होगी, बल्क ट्रक्स एपीआईज में होगी, ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट में होगी, सोलर पैनल में होगी, एंड बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट करेगी. एंड यू कैन वेरी वेल इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ कैन हैपन if what we did in mobile phone gets replicated in other things. So overall, my recommendation is please be long India growth story. एक बहुत बड़े आदमी है सिस्को के वाइस चेयरमैन जॉन चेम्बर्स करके, उनको किसी ने पूछा इंडिया के बारे में तो उन्होंने ये जवाब दिया, if I have to bet on one country in Asia, it will be India. And if I have to bet on two countries in Asia, it will be India twice. मेरे लिए नंबर 1 भी इंडिया है और नंबर 2 भी इंडिया है. This sums up investors' expectation about India. I hope and pray that we deliver and create value for everyone. And as an investor, you will be able to benefit far more than being a trader. इस कॉल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक पिछले 15-20 सालों में 10 बार खरीदा, 10 बार बेचा. नेट पैसा जीरो बना होगा. और बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक 15 साल से लेके रखा है. बट ये कम लोगों ने जितना पैसा इन्वेस्ट करके बनाया वह बाकी बहुत सारे लोगों ने ट्रेडिंग करके जितना बनाया होगा उससे कई गुना ज्यादा होगा. So be an investor, don't be a trader. Trading is a very, very hard way of making money. Investment is very, very easy way of making money. But investment बिरबल की खिचड़ी है, बनने में टाइम लगती है. With this, Yakub bhai, I will end my talk, but happy to take some questions. Advice on regarding market and economy and world market. Also, one question arises, however, the world global market rates, interest rates cycle is likely to reverse. Please give your input impact due to change in likely increase in interest rate. What will be the impact on interest rate on market regarding Fed rate changes and everything? So again, market जो जानता है वैसा ही होगा, so there will be not much impact. So what is market discounting today on Fed? Fed is likely to raise rates. It's a well-known thing. It's not a secret anymore. Market is expecting Fed to raise interest rate 3 times this year and 3 to 4 times next year. Now, if Fed raises more than this, instead of 3 times, suppose if it raises 6 times, then our markets can correct. But if Fed raises 3 times, then I don't think so market के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा impact होगा. Now, market is also expecting Fed to raise rates 3 times in 25 basis points. What if Fed raises in 50 basis points? That is not discounted. 25 into 3 is 75 basis points. 50 into 3 is 1.5%. So, 3 rate hikes of 25 basis points each, market is discounted. Anything more than that will create some impact on our market. Now, let me tell you a range of what people are talking about. Someone is saying Fed will raise interest rates 6 times. Someone is saying that Fed will raise interest only 1 time and thereafter they'll have to cut. Now, if
first person is right. If Fed raises 6 times, then our markets will correct. But what if that second person becomes right and Fed after raising once has to actually cut because growth suffers? Then our markets will bounce back. So you will have to go with what will happen in the future. So one more question comes. Is it good to be bullish always whenever market comes down, or good to go with the flow, which I believe is good? What is your view on it? So you cannot go with the flow. Flows can be driven by sentiment. Flows can be driven by money power. You have to always go with fundamentals. मतलब मैं स्टॉक के नाम नहीं ले सकता, बट आपने कितने सारे स्टॉक को ऐसे रॉकेट की तरह ऊपर जाते देखा है और फिर वो जमीन पे जोर से गिरते हैं. इन स्टॉक में फंडामेंटल कुछ होता नहीं है. ऑपरेटर सोशल मीडिया पे टिप घुमा देता है और लोग खरीद लेते हैं, होपिंग दैट कि कल बढ़ा था तो परसों भी बढ़ेगा, पिछले 3 महीने बढ़ा है तो आने वाले 3 महीने भी बढ़ेगा. जब ऑपरेटर अपना माल डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, स्टॉक को छोड़ देता है और स्टॉक फिर नीचे गिर जाता है. सो नेवर एवर गो विथ फ्लो, ऑलवेज गो विथ फंडामेंटल्स. कम बनाओ चलेगा, बट सर्टेनिटी के साथ बनाओ. दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. Sir, US bond yield is now 2.02. So what will it impact our market? सी 2% ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी है बिकॉज वो आ चुकी है. ये कोई नई बात नहीं है. एंड 10 ईयर यील्ड कहां पे जाएगी? अब अगर फेड 7 रेट हाइक करता है तो फेड रेट हो जाएगा 2% के आसपास. उसके ऊपर 100 बेसिस पॉइंट स्प्रेड रखो तो 3% 10 ईयर यील्ड लुक्स फाइन. अब जब तक ये 10 ईयर यील्ड 2% से बढ़ती बढ़ती 3% पे जाके रुक जाए, वो तो मार्केट में ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है. बट 3 की जगह पे खुदा ना खास्ता 7% हो गई, 5% हो गई, तो ऑब्वियसली अपनी मार्केट गिरेगी. और 3 की जगह पे वो 1 या 1.5% रह गई तो ऑब्वियसली अपनी मार्केट बढ़ जाएगी. एंड फेड रेट के ऊपर एक बात आप याद रखिए, जेपी मॉर्गन के चीफ है जेमी डिमॉन करके, दुनिया के सबसे बड़े बैंकर में उनकी गणना होती है. उन्होंने एक बार कहा था कि फेड 10 ईयर मतलब 10 ईयर यील्ड यूएस गवर्नमेंट की 3% को क्रॉस कर देगी. एक्चुअली 1 साल बाद क्या हुआ? फेड यील्ड 1.5% हो गई. सो इवन पर्सन ऑफ द कैलिबर ऑफ जेमी डेमोन कुडंट फिगर आउट कि ये 2% से 3% जाने की जगह पे 1.5% आ जाएगी. So please keep in mind that these are all variables which are not in our control. It will keep on changing. Now, if 10-year yield goes up to 3%, I think that's discounted into the market. If it comes down to 1.5%, it's not discounted in the market. If it goes to 4%, that is also not discounted in the market. So one more question is your view on IT sector, which last time we made before 3.5 years. You mentioned pick up any of the IT stocks and you will get a number of times returns. So which is already performed, but what's next now? Is it we continue to be invested in IT sector, or we need to change in other sector? And your most preferred sector also. Please let us know. So in IT sector today, there are, let's say, large cap IT companies and small and mid cap IT companies. Our feeling is that this year IT will be just like market. It won't deliver better return than market. But within IT sector, large cap IT will do well and small and mid cap ITs may underperform the market. So if you are a, let's say, 3 to 5 year investor, you have made enough money on IT, then please take some profit from small and mid cap IT and invest in large cap IT. If you don't want to do that, then please manage your expectation कि in small and mid cap IT in last 2-3 years I have made so much money that next 1 year even if return doesn't come, it is fine. I will hold on. So
be cognizant that past performance will not get repeated this year for sure. Okay, sir. Sir, recently the news regarding APG shipyard case filed by CBI, which is 2019 case already mentioned in the NPAs. So will it impact in future also, or it's discounted already? So will there be more NPAs? Answer is yes. If you are doing a business, there will be NPAs. But have banks learned from the past mistakes? Answer is yes. Will they go and fund another shipyard like they funded ABG? Answer is unlikely to be true. So today, if we look at our banking system, it is well capitalized, NPAs are under control, and most NPAs are provided for. ABG shipyard was declared NPA almost in, maybe 2014 or 15. And already provision has been made for this. So filing of this case will not result into new NPA for banks because it's already recognized and provided for. Sir, one big question in every investor's mind right now: will LIC IPO impact the market regarding previous experience on our power and everything? Our communications. So will it impact like big IPOs coming and market goes down? So will it impact? Market, does it look at the size and get impacted, or does it look at the experience and get impacted? If our power would have given positive experience to investors, do you think markets would have corrected? Answer is no. But because it came at a high price, it gave a negative experience to investors, overall sentiment got impacted and markets corrected. We believe LIC is a real business. Jindagi ke saath bhi, zindagi ke baad bhi. That is their slogan. 30 crore Indians have benefited from LIC. They are policy holders. 20 lakh agents are selling LIC in every nook and corner of India. There is hardly any Indian who doesn't know about LIC. It is top 10 insurance companies in the world. So from a business point of view, there can't be anyone who says ki LIC ka business is like our power business. It is real business. Now, at what price LIC comes to the market, that we have to see. We know what is their embedded value, but we don't know at what price it will be offered. If it is offered way above its fair value, then obviously investor experience will be bad and markets will be corrected. But if it is offered at fair value or below fair value so that investors can make money, then this IPO will bring more customers into market. Many LIC policyholders will become investor into stock market. Today, number of investors in stock markets through Demat account is 8 crore. LIC has 30 crore policyholders. So it is the pricing of LIC and the experience post-listing which will determine whether this issue will help market positively or negatively. Let's hope and pray that LIC issue is priced properly. Okay, sir. Pharma companies, main pharma sector, especially laboratories and others regarding pharma hospitals and everything. So will it go further down, or it will recalibrate over the years again? So pharma has underperformed the market for last 1 year. Yes. And they had done very well post pandemic. So expectation था ज़्यादा build हो गई थी, deliver उतना हुआ नहीं, तो market गिर गया. If you have a 3 to 5 year view, we think it is time to be overweight pharma. Pharma companies will do well as valuations have corrected, and the bad results are about to end. यहाँ से result should start picking up. So we are adding into pharma names in this correction. We think next 3 months pharma will be a good accumulation zone, and June 22 onwards the pharma results will be ahead of market expectations, which will create a bottoming of pharma and market outperformance.
સર બજેટ પછી માર્કેટમાં ઘણી મોટી વોલેટાઇલ જોવા મળી. હવે પ્રશ્ન એ થાય કે આટલી મોટી વધઘટ રોકાણકારોએ શું કાળજી રાખવી જોઈએ? કે વોલેટાઇલ એક દિવસ 1750 પોઈન્ટ અપ, 1750 પોઈન્ટ ડાઉન, ને ક્યારે ને કેવી રીતે એક સેક્ટરમાંથી બીજા સેક્ટરમાં શિફ્ટ થવું જોઈએ, એમાં થોડુંક તમે ગાઈડ કરો. સો યાકુબભાઈ, તમે મુંબઈથી સુરત જવા માટે નીકળ્યા તો તમારી ટ્રેનની સ્પીડ હંમેશા 100 કિલોમીટર પર આવર હોય. સિગ્નલ હોય તો 0 થઈ જાય, ક્યારેક રિવર્સમાં બી જાય, અને ક્યારેક ખાલી રસ્તો હોય તો 100 કે 120 પર બી જાય. સેકન્ડ ચીજ, તમે એનાથી ગભરાઈ જાઓ, અરે ટ્રેન રોકાઈ ગઈ, હું સુરત ક્યારે પહોંચીશ, કે તમે શાંતિથી સુતારો તમે, કારણ કે ખબર છે આ પહોંચી જશે. સેકન્ડ ચીજ છે, તમે ટ્રેનમાં બેઠા હોય ને લોકલ ટ્રેન જતી જુઓ તો તમે એ ટ્રેન છોડીને લોકલ ટ્રેનમાં પહોંચી જાઓ નહીં, બીકોઝ ખબર છે ભાઈ લોકલ ટ્રેન ભલે ભાગી રહી હોય પણ એ તો બોરીવલી જઈને અટકી જશે, આપણે તો સુરત જવું છે, આપણે આપણી જગ્યાએ બેસી રહો. સો સેમ થિંગ ઇઝ ઇક્વિટી માર્કેટ. રોજે રોજ વધઘટ થાય છે, તમે જુઓ છો શું કામ? તમે તો 5 વર્ષ માટે રોકાણ કર્યું છે, જ્યારે કંપનીનું ક્વાર્ટરલી રિઝલ્ટ આવે ત્યારે જોજો કે આ કંપની બરાબર કરે છે કે નહીં. લોકો ક્વાર્ટરલી રિઝલ્ટ જોતા નથી અને માર્કેટમાં વધઘટ થાય એને જોયા કરે છે. સો like you travel between Mumbai to Surat, same way you have to make investments. કોઈક આગળ વયું જાય, કોઈક પાછળ વયું જાય, ચિંતા નહીં કરવાની. ક્યાંક સ્પીડ ઘટી જાય, ક્યાંક વધી જાય, ચિંતા નહીં કરવાની. તમારે સુરત ઉપર ઉતરવું છે, સરખી ગાડી પકડીને બેસી રહો શાંતિથી, સુરત આવી જશે. કદાચ 5 મિનિટ વહેલું આવશે, કદાચ 5 મિનિટ મોડું આવશે. नीलेश भाई, मारे एक प्रश्न है कि नीलेश भाई, मेरा एक प्रश्न है कि स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, एसआईपी है और अपने यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस है, तो ये सब चीज में व्हाट इज मोर एडवाइजेबल, हाउ टू वी शुड टेक डिसीजन, बिकॉज नॉर्मल इन्वेस्टर को शायद उसमें कंफ्यूजन कई बार होता है. सो अगर आपके पास नॉलेज है तो आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट निवेश करिए, बट आप किसी की टिप सुन के, किसी की बात सुन के निवेश करने वाले हैं, आप कभी क्वार्टरली रिजल्ट ढंग से रिसर्च नहीं करने वाले हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली मत जाइए, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करिए. सेकंड, म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका एसआईपी है. एसआईपी के जरिए आप हर महीने कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते रहेंगे और उस एसआईपी के पोर्टफोलियो को आप लंबी अवधि के लिए रखे तो वो बहुत अच्छा पैसा बना देता है. मैं एक किस्सा कहता हूं, मैं लोगों को हमेशा कहता हूं आप एसआईपी करिए, एसआईपी करिए. मैं अपने ड्राइवर मेट के लिए एसआईपी करता हूं, तो मेरी बातें सुन के, जब मैं एक्सिस बैंक में काम करता था कुछ साल पहले, तो उन्होंने अपने ड्राइवर के लिए एसआईपी चालू कर दी थी 2000 रुपए प्रति माह की. तकरीबन 54 मंथ्स उन्होंने एसआईपी चालू रखी तो 1,08,000 रुपया निवेश हो गया. फिर वो ड्राइवर उनकी नौकरी छोड़ के चला गया, बट बोला कि सर आपने जो पैसा लगाया है वो आपके पास ही रखिए, जब मुझे जरूर पड़ेगी तब मैं ले लूंगा. कुछ समय पहले अपनी डॉटर की वेडिंग इनवाइट देने के लिए वो आया था और साहब को बोला कि सर आपने बोला था कि आपने कुछ मेरे लिए म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, अगर वो मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा है, बिटिया की शादी करनी है. इस बंदे ने रिडम्पशन करके उसको जब 4,50,000 का चेक दिया तो उसकी आंख में आंसू आ गए. ही नेवर एक्सपेक्टेड कि मेरा 1 लाख 4 लाख बन गया होगा. उसकी बेटी की शादी का पूरा खर्चा निकल गया. दिस इज द पावर ऑफ एसआईपी. इट कैन गिव फाइनेंशियल फ्रीडम टू पीपल. आज याकूब भाई आपको बताएंगे कि हमारे मोस्ट ऑफ द इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी रिटर्न 10-10 साल के 15 से 25% हैं. किसी भी निवेशक के लिए एक स्वप्न बराबर है. इस दिवाली में एक बंदे ने मुझे फोन करके बोला कि नीलेश भाई आपका घर का एड्रेस दीजिए ना, मिठाई भेजनी है. मैं बोला भैया हम लोग मिठाई नहीं ले सकते, हमारा सेबी का रेगुलेशन है, आप खाली दुआएं दिए, आपने विश किया वही बहुत है. फिर मैंने पूछ लिया कि बट अब मतलब सडनली क्यों याद आया मिठाई देना, पिछले कितने सालों से तो तूने नहीं भेजी. इसे नहीं नीलेश भाई, मैं अपना पोर्टफोलियो देख रहा था, आपने एसआईपी चालू कराई थी,
तो वो SIP का रिटर्न देख के मैं बिलीव ही नहीं कर पाता हूं कि मेरी इतनी वेल्थ बन गई है। तो आप याद आ गए, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मिठाई भेज देता हूं, त्योहार का टाइम है। बट ये 15, 20, 25% रिटर्न खाली उन लोगों को मिला है जिसने अग्नि परीक्षा पार की है। मार्च 2020 में अगर आप हमारे SIP रिटर्न देखते, 3 साल के लिए नेगेटिव रिटर्न था, 5 साल का रिटर्न सेविंग्स बैंक अकाउंट से कम था, और 10 साल का रिटर्न 50% गिर के फिक्स डिपॉजिट के बराबर था। कोई भी निवेशक मुझसे खफा हो सकता था कि नीलेश भाई SIP करके हमको बेचते हैं और 3 साल में पैसा कम कर दिया, रिटर्न तो कुछ नहीं दिया। बट उस अग्नि परीक्षा में जो लोग हमारे साथ बने रहे, उनको आज 15 से 25% कंपाउंडेड रिटर्न 10-10 साल का मिल रहा है। सो SIP के जरिए निवेश करिए, लंबी अवधि के लिए निवेश करिए, वह म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सबसे अच्छा मौका है। आज की तारीख में तकरीबन 4 करोड़ इंडियन और 4 करोड़ SIP चल रही है। मे बी नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स विल बी लिटिल लेस बिकॉज एक एक आदमी की 5-5, 10-10 SIP भी हो सकती है। बट 4 करोड़ SIP के जरिए मोटा मोटा 11,500 करोड़ रुपया हर माह आता है। सो दैट इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड जैसा ही तरीका यूलिप का है, उसमें म्यूचुअल फंड के साथ साथ आपको इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिलता है। बट इंश्योरेंस में एजेंट की कमीशन ज्यादा होती है, म्यूचुअल फंड में कम होती है। तो यूलिप की जगह पे आप म्यूचुअल फंड और टर्म इंश्योरेंस ले ले तो वो सस्ता होगा और आपके लिए फायदेमंद होगा। सो इंस्टेड ऑफ यूलिप, गो फॉर टर्म इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड। SIP best way to invest in mutual fund, and if you know how to invest in market, then you can go directly in stock market. Sir, mid cap and small cap, what's the view for the next 3-4 years? So हासिम भाई, पिछले 2-3 साल में स्मॉल एंड मिड कैप्स हैव डन एक्सट्रीमली वेल। इनफैक्ट मार्च 2020 से देखे तो निफ्टी is up about 42% a year between March 20 to Jan 22. Mid cap is up 75% a year and small cap is up 86%. तो ये जो रिटर्न है वह आने वाले समय में आने का कोई चांस नहीं है, बिकॉज मार्केट सस्ता था तो इतना रिटर्न बन गया। अब हमें लगता है कि इस साल स्मॉल, मिड और लार्ज के रिटर्न में उतना डिफरेंस नहीं रहेगा। ये सब लो डबल डिजिट रिटर्न के आसपास रिटर्न देंगे। सो एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करके निवेश करिए, चाहे फिर लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो। अच्छी कंपनी में निवेश करिए या म्यूचुअल फंड में निवेश करिए। Okay, sir. So last question regarding crypto market. The norms are yet to be decided and legalized, the tender which Nirmala Sitharaman ji said. So what will impact on the market and what will be the tax liabilities on investor if they are holding right now? So whatever crypto you are investing and making money, you will have to pay 30% tax. That is the proposal in the budget. And crypto is not illegal, but it is not regulated. So if you lose money in crypto through a fraud, you can file a police complaint, but you can't go to SEBI, RBI, IRDA या PFRDA and complain against the service provider. All crypto is legal but unregulated. So one will have to be very, very careful while trading or investing in crypto. Okay, sir. Sir, most of the question taken. Thank you so much for the. Thank you. Thank you so much for all the questions which you answered beautifully, sir. Thank you so much, sir. Over to you. અમારા એડવાઇઝર હેમંતભાઈ દેસાઈ સાહેબનું વોટ ઓફ થેન્ક્સ કરવા માટે રિક્વેસ્ટ કરીશ. When we listen Nilesh Bhai Shah, we feel that we should continue listening him because of his grasp on macroeconomic aspect, his grasp on microeconomic aspects, and his clear-cut thinking.
First, he started about what is the near-term market movement, and he brought in the factors like impact of Omicron, impact of budget, particularly the conservative approach in budget as regards to revenue, as regards to disinvestment, and also he emphasized that government is going to spend more and more on infrastructure. Then he came to valuation that look, our Nifty EPS next year is going to be 875, and we are around 18,000. So our PE is about 20. Historically is 18. Future PE is 20. It's not very high. Then he also justified with the number of factors like corporate profitability and other things. So when we hear him, we get more and more confident. We feel like that we should have a dialogue with Nilesh Bhai every month so that our confidence level can continue. One thing is for certain, that India is now entering Amrit Kal, and our finance minister has described this, that we are going to complete 75 years this August, and then next 25 years means India at 75 to India at 100 is going to be Amrit Kal. Where our economy will go, how that will translate into the opportunities in capital market. These are all the things that one should understand, and we will be convinced more and more that it is the India story that is going to grow bigger and bigger, and we are going to benefit out of that. Nilesh Bhai, thank you very much for sparing your valuable time and giving time to our Chamber of Commerce. We are very happy, and we will request you to give more and more inputs on a continuous basis, because with people like you, we recrystallize our thinking and we do the right things. Thank you very much to Nilesh Bhai and everybody else. Nilesh Bhai, once again request for your physical presence in Surat at your convenient time. We'll write you a letter. Please allot one date after 1 month or 2 months, whenever you find it is convenient. Sure, we'll look forward to that. Thank you. Yes, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you.